बिग बुधा की तरफ जाते हुए रोड इंतहाई आपका लश ग्रीन है। दोनों साइड पे आपकी ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, ये स्कूटर वगैरह, टक शॉप्स, सारी चीज़ें हैं। बेहतर यही है कि आप यहाँ पे कुछ देर के लिए रोक के यू स्टॉप हियर। रास्ते में ये एलिफेंट को रखा गया है कुछ बाहर डिस्प्ले के लिए, एंड टूरिस्ट ऑफन कम हियर एंड फीड द एलिफेंट्स। ये आप तस्वीर वगैरह ले सकते हैं, मुफ्त में ले सकते हैं। एंड इफ़ यू वांट फीड, आपको कोई 100-200 बात देने पड़ते हैं उनको फीड कराने के लिए। सो दिस लाइज समवॉट 8 किलोमीटर अप इन द हिल, और बिग बुधा के रास्ते में ही पड़ता है। सो यू कैन पार्क योर व्हीकल एंड हैव दिस इज़ once in a lifetime experience. Right now at the entrance of Big Budha, इस साइड पे आप अपने लिए कवर व्हील्स वगैरह ख़रीद सकते हैं। अगर आपके शोल्डर्स कवर नहीं है तो शोल्डर आपके कवर होने चाहिए इस जगह पे आने के लिए। ये सामने प्रोडक्ट फॉर चैरिटी है, यू कैन परचेज, और ये चैरिटी में जाते हैं। ऑब्वियसली प्राइसेस आर अ बिट हाई बट दिस इज़ फॉर चैरिटी पर्पज। सो राइट नाउ यहाँ पे काम शुरू है। लास्ट टाइम जब मैं आया था तो दिस वॉज हैविंग अ लाइब्रेरी एंड having a lot of things. इस वक्त इसमें रेनोवेशन का काम जारी है। So do charity and support Big Budha. Big Budha Temple के फ्रंट में ये मुख्तलिफ़ किस्म के हाथियों के स्कल्पचर है, और ये शनि है कि सनी है उसका है सवड़ी का आप। सो बुधा के मुख्तलिफ़ स्टाइल के स्कल्पचर बने हुए हैं। ये आप लोगों का वो है घंटी है, ये एक हाथ ऊपर एक हाथ नीचे। ये आपका ये बना हुआ है, दिस इज स्लीपिंग बुद्धा, दिस वन इज प्रीचिंग मेडिटेशन। सो डिफरेंट स्टाइल। So this is the 360-degree view of Buddha. This one thing cost around, the original one $500,000. So I am here on top of the Buddha. This is back view of the Buddha. The very famous historian had just interviewed with us, and I will share his clip. Obviously, I will be translating these clips into English or Urdu, as he had done his interview in Thai language. Sawadee Krap. Sawadee Krap. So, what's your name? Kunchu Arai. Pom chhe Thon. Ponche Ton. Krap. Ton, nice to meet you. Tell me something about Big Budha. Buddha นี่เขาเรียกพระเมนธมงคลศรัทธา45เขาเรียกอย่างนั้นน่ะพระใหญ่เมืองภูเก็ตเขาเรียก ओके 1987 में इसका उद्घाटन हुआ था। यहाँ पे इनकी स्कल्पचर को बनाया गया था। द टिकट प्राइस, नो टिकट, मनी टिकट। อ๋อนั่นข้างบน ไม่ ครับ Okay, he is saying that no entrance fees, you had to cover your shoulder and you have to have this knees fill. You can donate something inside but there is no proper ticket cost. ใช่ใช่ How far this from Old Phuket town? นี่ฉลองเบ The Chalong Bay beach is just down here, only 12 kilometers. And how much is the height? ไออะไรนะเรียก He doesn't know about the height, but actually if I safely assume this is 1200 meters above the sea level. 1200 meters above the sea level. ครับ Khap khun khap khator. ขอบคุณ Thank ครับ you. ขอบคุณครับ Thank you so much. ครับ So right now in front of the Big Budha, जिसको अभी recently बनाया गया है कुछ decades में, and my friend की पहली travel itinerary ये थी कि ये Big Budha ज़रूर देखेंगे, because इसकी बंदी के Instagram पे इसकी तस्वीर लगी हुई थी and she belong to India. तो guy is here, और जो मैं देखने आया हूँ वो ये है कि इसके बैकग्राउंड में जो फुकेट का ओल्ड टाउन है, बेसिकली इसका पर्पज़ यही है कि बिग बुधा इज़ लुकिंग आफ्टर द होल ऑफ फुकेट एंड ही हैड अ बर्ड आई व्यू ऑफ द सिटी. So more facts coming soon. So finally it's my first day at Phuket, और मैं बिग बुधा as usual यहाँ पे हाज़िरी देने आया हूँ. बिग बुधा के बारे में मैं आपको थोड़ा सा यहाँ के मिथ्स और कंसेप्ट समझाऊँ.
ये रिसेंटली इस स्ट्रक्चर को बनाया गया है और ये बिल्कुल फुकेट का जो पूरे का पूरा शहर है उसको देख रहा होता है. सो इसका कंसेप्ट ये है कि दिस बिग बुद्धा स्कल्पचर इज एक्चुअली प्रोटेक्टिंग द फुकेट फ्रॉम द टाइड्स ऑफ द सी. और कोई सुनामी कोई ये चीज़ें ये प्रोटेक्ट करता है. इसकी वजह से ये नेक शगुन माना जाता है इस मज़हब में कि बिग बुद्धा का जो ये वाला है स्कल्पचर है वो प्रोटेक्ट करेगा आपके फुकेट को. दूसरा मिथ इसके बारे में मैं आपको ये बताऊं कि अगर आप बैक करके इसकी तरफ जाएंगे तो ये बिग बुद्धा आपको लगेगा कि ये आपके पीछे पीछे आपके साथ चल रहा है. तीसरा फन फैक्ट इसके बारे में ये है कि इस वक्त इसके तहखानों में सफाई जारी है और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली यहाँ से बहुत सारी चीज़ें निकली हैं जिसमें किताबें हैं, जिसमें यहाँ पे पुरानी लाइब्रेरी की चीज़ें हैं, छोटे छोटे स्कल्पचर थे और यहाँ की और नवारिदात भी यहाँ पे पाई जाती हैं. सो नाउ आई विल शो यू द बीच कि जो यहाँ पे फुकेट ओल्ड टाउन का बीच है. It is just down there and you can have a 360-degree view of the Phuket, including the old town, the Coron beach, the Paradise one, and the old the pier where the boats and ship come and have cargo there. So this one was the old pier and you can appreciate. The last fun fact about this is during last tsunami Phuket was the least disturbed city and the people believe that this is due to the presence of Big Budha here at Phuket. Otherwise, what I counter argue that there are a lot of more Big Budha temples and Big Budha sculpture in Pattaya and that was badly affected by tsunami. So stay tuned. We will move now to our next spot.